Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning, Sureshji. Good morning, Varun. Whatever doubts you guys are having, please do ask. We'll start the streaming in 2 minutes. Good morning, Naveen. हर्षित allocation change कर दूं. Okay, ठीक है. सिर्फ BTC एक बार दिखा दो. सेम है जो ग्रुप एनालिसिस में आया है वही है. नो चेंजेस. ये चेंज होगा तो अपडेट होता ना. What are the two major categories that we'll be following? Just start the analysis. Starting from 1 hour. कल के दिन में सरप्लस डिमांड से एग्जैक्टली रिजेक्शन लेके कंटिन्यूटी में मूवमेंट डेवलप हुई थी. राइट. फर्स्ट एक्शन प्लान मार्केट शॉर्ट के तरफ था क्योंकि एशियन सेशन में हाईएस्ट वॉल्यूम. आइसबर्ग जोन से रिजेक्शन रिजेक्शन कंटिन्यूटी पे एक हाई वॉल्यूम कैंडल जनरेशन. Execution perspective were taken in this zone of action 1 and this point of action 2. Right. So two add-ons were taken in the consideration of the movement. उधर से ही डेवलपमेंट में कंटिन्यूटीली 480 pips की मूवमेंट डेवलप हुई थी. Right. So in this scenario, what are the next major things that you have to look for? Right. Does market have an intact? Yes, we have an intact pending over here. With the intact pending, what do we notice? Do we have a dilution? Yes, we have a dilution. Where is the dilution range? This is the dilution range. If the market is trying to move
invertibly in a direction towards a long today. So what is the one major thing it has to do? It sorry, it shouldn't create any LG candles in the play, right? At the current scenario, market has created a high volume in this current candle 3 hours back. लगा है क्या? It's in this candle. Does it mean that market will take a rejection from the same point of action? No. Whenever the market is in the zone, what does it do? We do have an intact zone. That is the first thing that you have to look into the play. Once we understand that play of action, then we look for the next probable allocation point. इसमें हमारे पास क्या इंटैक्ट है? Yes. Minimality M1 फॉर्म हुआ है तो 150% से रिजेक्शन कंटिन्यूटी टिल M2, राइट? उस पॉइंट ऑफ एक्शन से एक रिजेक्शन एक्सपेक्टेड है टू कंप्लीट द डाइल्यूशन पॉइंट, राइट? जब ये डाइल्यूशन पॉइंट डेवलप होता है, व्हाट आर द नेक्स्ट मेजर थिंग्स दैट नीड्स टू बी टेकन अंडर द कंसिडरेशन? उसके लिए विल कम टू 15 मिनट्स, राइट? सो इन दिस पॉइंट ऑफ एक्शन डू वी हैव एनी एलजी कैंडल्स? कल के दिन में जो ग्रुप में अलॉट हुआ था, थोड़े लोग कंफ्यूज हुए थे एलजी कैंडल कौन सा है करके. In that perspective, there were two LG candles which gave a play. LG candle 1, LG candle 2, right? And for the MTSL was moved below this LG candle and then continuity in the movement. In today's scenario, अगर मेरे को market ऊपर जाना है ना, let the market come down. Why? Because we have a LG candle formation. Dilution develop होने दो. Dilution develop होने के बाद inevitably market setup form करने दो. उसी सेटअप के साथ ट्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन देखा जाएगा एड ऑन के लिए, नॉट प्रायर टू दैट. Okay, so these are the few things that you have to keep in mind while looking for a trade in execution for today's Asian session. Henceforth, what are the two things that you have to keep in mind? No running candle execution, because market single candle में 50-60 pips की movement बना रही है, right? Henceforth, wait for an intact or a completion of LG. Let the market form a setup. Then the execution will be taken under the play, not prior to that. Am I clear in this? Good morning, Ritesh. So what are the next major things that we have to look over here in this place? Right? If the market sustains and continue into the play, what are the few things that needs to be taken? We don't have a retracement to allocate a new supply. We don't have a placement to look after the upcoming movement. Henceforth, the second serving will come into the play on the sustaining above this supply 200%. Right? If the market sustains above this point and gives a continuous movement, what will market tend to do? We will be allocating the sustainable second serving, which is in the play of rejection point of minimality 150%. Okay. Only the scenario is taken under the consideration when the market
tends to move in a direction. सर एक बार अलोकेशन शेयर दिखा दे. हाँ, डेफिनेटली 2 मिनट रुक जाओ, दिखाता हूँ. फॉर्मेशन में तब तक बने नहीं रहेंगे जब तक मार्केट एक क्लियर इंडिकेशन ऑफ ए सेटअप फॉर्म नहीं करती. Am I clear? अगर कंटिन्यूएशन में लॉक फॉर्म होता है तो कैसे देखा जाए उसे? If the market is in continuous formation and if there is no log of retracement which is being carry forwarded in the movement, the only thing that you can look and work on is to allocate the 1 hour placement to get the rule of action plan. कंसेक्यूटिव प्लेसमेंट को अलॉट होने दो पहला. डायरेक्ट मूवमेंट एक्शन प्लान पे मत देखना, सेटअप फॉर्म होने दो उसके साथ ही. आते हैं कल की बात के लिए, राइट? एग्जैक्ट रिजेक्शन पॉइंट सरप्लस एक्शन प्लान के साथ मूवमेंट कैसे डेवलप हुआ था एंड पॉइंट ऑफ एक्शन से, राइट? सो व्हेन द रिजेक्शन वाज शोकेसन करके स्ट्रीमिंग उठा के देख लेना एंड में, राइट? So you'll come to know the surplus 200% demand point of action was taken under the play with this continuity in the movement. एक ड्रॉप पॉइंट आया था लंदन सेशन में which wasn't able to cross forth the surplus demand. Henceforth, this demand was mapped at this point to identify the exact dilution point. With the dilution point, market continued the movement. First come first serve में कौन सा allot करोगे? The first come first serve supply was into the play of this. So this will be the play of action which will be taken under the consideration for the mapping. Right? So if we take this mapping in the first, what do we see? 200% gets completed at this range of motion. Then the second serving comes into the play. Where is the second serving taken into the action plan? This is the second serving, right? The second serving, when you play out over here, the action plan was of minimality M1 200%, and then the break and continue. When there was a break and continue,
What is the next plan of action? Serving 3 देखोगे, serving 3 maps with the serving 2, henceforth will come to 1 hour. With 1 hour mapping plan, what is the next step of action that needs to be looked at this point? The only thing is the second serving which was re-allotted in the placement form. मतलब जो फर्स्ट सर्विंग सेकंड सर्विंग जो मैप्ड है 1 आवर पे, वो छोड़ के जो फर्स्ट सर्विंग में आएगा, that will act as our replacement point, right? This was taken under the consideration. This and this matches with swing 1. So first serving will play from this point to this point, right? And mapping it from the bottom as it's 1 hour. Henceforth, this 1H supply 100% was taken under the consideration and TP was given at the same point, right? हमें allocation देखा था 200% के नीचे TSL रखने के लिए 4320 के पास, right? So first come first serving में कौन सा point of action आता है? The same break and continue. With break and continue, second serving will get into the play. What is the second serving that we are having? This is the second serving. जब second serving की placement होती है, what is the one major thing that needs to be taken under the consideration? Revap count. So this point will take under the play 200% rejection. 200% rejection के साथ first come first serve demand carry forwarded to 150% of demand action. उसके साथ how do you map the first range of supply? First range of supply will come with the first movement. So this is the first movement of the supply which will act in pursuance of this, which took an 100% rejection. With 100% rejection, market continued the movement forward. With the movement forward, the formation of LG point was there at this range. Henceforth, the rejection was showcased. How will you map the rejection point? First come first serve rejection point was taken from this demand range. Point 1, break and continue. Point 2, demand 150%. With the same range of motion, market hint to continue the movement. What is the first come first serve supply that we are holding at this current stage? So the first come first serve supply is this movement, which will be taken in play of the continuation, right? So this point of action will have a play at this range because at the rejection point, with the rejection point, M1 formation, with the M1 formation, continuity in the movement, break and continue, 150% rejection. Okay. So with 150% rejection, first come first serve demand, placement over here, 100% rejection, first come first serve demand, replaced and took a play at this point of action. यहाँ से ही market in continuously movement में. So if I map the demand followed with the current, can I look for a trade? नहीं यार, don't. तुम्हें यहाँ पे demand mapping at the current stage देखना है. Then the mapping will be taken under the consideration of one candle closure and then followed through. Followed through में जब आएगा तभी ही trade of execution देखा जाएगा, उससे पहले नहीं. Clear? मेरे हिसाब से यहाँ पे बड़ा रिजेक्शन कुछ दिखने के लिए है नहीं, बिकॉज एक ही एलजी पॉइंट है which is this, and each and every dilution will be taken under the play post the setup is formed, not prior to that.
प्रायोर टू दैट जो डायरेक्शन में है वहां पे MTS लगा के फॉलो थ्रू में रहो. सो डायरेक्ट सेकंड प्लेसमेंट अलॉट किया है. ओके. रिफ्रेश कर लो अनुराग. गुड मॉर्निंग. क्यों ना अभी बहुत दूर है वैशाली. चलने दो. अगर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में ट्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन देख रहे हो ना, रिवैप स्ट्रेटेजी को यूज करो. स्टार्टिंग विद द बेस्ट फ्रेंड. निफ्टी अभी के लिए नहीं, रुक जाओ, करेंगे. मार्केट कहाँ पे कल अलॉट किया था वहां पे ही है. सो लेट मार्केट गिव एन इंडिकेशन ऑफ ए मूवमेंट, उसके साथ ही अलॉट करेंगे, उससे पहले नहीं. कल जहाँ पे अलॉट करके छोड़े वहां पे ही है. राइट. सो इस जोन में तुम्हें खेलना है, खेलो. मार्केट को पैसे दो. प्लेसमेंट वन, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. ब्रेक, मिनिमलिटी,
200% rejection. Again, first come first serve allocation point. 1, gap up opening 3, placement 1, placement 2. %200% rejection. ओके, इसी रेंज ऑफ मोशन में बने रहना। जब तक मार्केट इंडिकेट नहीं करेगा तब तक no action plan will be taken under the consideration for a placement or to revamp the executions. ठीक है? सुरेश जी, अभिषेक ने बोला आपने एनालिसिस शेयर नहीं किया है, प्लीज शेयर द एनालिसिस। गाइस सभी लोग एक बार रिफ्रेश कर लो पेज को, जिन जिन को भी लैग फील हो रहा है। Whatever doubts you guys are having, please do ask. Stream will be there for next 20 minutes.
Can you please explain why if 150 or 200 completion is done of supply or demand when we Can you please explain when 150 and 200% completion is done of a supply or demand, then will we wait for a new demand or a supply range to be formed or will use the first come first served? If there is a break of 100%, the first target allocation is always 150. If there is no rejection at 150, then the movement will be at 200. At the 200 moment, if a red candle closure is being showcased, then the first come, first serve demand will be taken into the play to allocate the structure. If the placement is not being showcased and if there is no dilution in the liquidity, then the movement will be taken henceforth, carry forwarded with 1 hour allocation, followed with the new movement action plan, right? So whenever there is a break and continue of minimality of 200, is henceforth we look for a mapping of a surplus if there is a rejection of 150 or 200. If not, the higher time frame screening gets into the play of 1 hour to map the first come first serve to allocate the targets with TTS 2.0. If you take the mapping allocation of swing low, swing high, and retracement point will be taken under the consideration of this. Henceforth, the targets were allotted at 4324 and 4332. That were the same targets which was being shared. सुरेश जी ब्यूटीफुल एंट्री एट 4379 लॉन्ग के लिए जो S2B1 के साथ अलॉट किया है गुड वन डिमांड स्ट्रक्चर आपने जो प्लेस आउट किया है ना सुरेश जी उसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व अलोकेशन भी लीजिए आपका डिमांड 200% मैपिंग पे है उस मैपिंग को रीस्टेबलाइज करके फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मूवमेंट के साथ 150% पे अलॉट कीजिए 9 o'clock की डिमांड कल की even what you have mapped is the right one which has been followed with minimality M2. Henceforth, the movement action plan is taken under the consideration for M2 200%. That's just not demand 200%. Okay, Suresh ji. Good morning, Yashodit.
नहीं नहीं आज है सेशन पर। ओ रोज छुट्टी मिलेगा। One more confusion when book. One more confusion when big moments comes and first come and second serving are open in 15 minutes. Then what to do in marking? We will mark the moment when market stabilized. We take the moment action plan of a higher time frame, Anurag. That is 1 hour.
Okay, but what will be done on 15 minutes as execution is done on 15 minutes? Very good afternoon, Peter. Took a small trade in short running with 50 pips. First come first serve allocation के साथ तो लॉन्ग का MTSL 4312 पे रख लो सभी लोग. First mapping will be of conversion, second mapping will be of demand. अंबिका तुम्हें ही बोल रहा हूँ. कन्वर्जन मैपिंग करो पहला, उसके बाद डिमांड ऑन द ब्रेक. TP1 will be LG point जो कि 110 pips के पास. 70 pips होते ही मूवमेंट एक्शन प्लान को MTSL के साथ फॉलो अप में रखना. ठीक है. डेवलपमेंट का रेंज ऑफ मोशन में रहो. सेवेंटी पिप्स इन मूवमेंट. स्टार्ट विद MTSL. There is no placement for TTS 2.0 over here. So make sure first target is LG point. Okay. स्मिता मैम ड्रैग करो और थोड़ा नीचे. Stream will be there for next
10 minutes, जो भी doubts है, please do ask. Good morning, Shaya. Sir, conversion से rejection ले रहा. Thank you so much. नहीं तो मैं पूरा demand hold कर ले. Which conversion should we take into the play? This is the conversion point. The supply converted into demand. I'm getting confused when you're saying dilution of liquidity, reformation, etc. wordings. Can you please explain these things, how to understand it? Very simple. If the market creates a formation, the formation will be always looked into the preservance of a movement action plan. सिंपल भाषा में बोलना चाहो तो अगर मार्केट 100 रुपया ऊपर बढ़ा है, राइट, तो 100 रुपया से 200 रुपया नहीं जाएगा. 100 रुपया से रिजेक्शन लेके 50 रुपया, 30 रुपया, 70 रुपया तक आएगा. वो 70 रुपया से जब रिजेक्शन डेवलप होता है उसे हम कहते हैं डाइल्यूशन ऑफ लिक्विडिटी, which is in short form diluted liquidities, right? उस डाइल्यूशन ऑफ लिक्विडिटीज में जब फॉर्मेशन बिल्ड होती है उस पॉइंट ऑफ एक्शन से 200 रुपया तक के मूवमेंट तय करती है वहां. रिफॉर्मेशन क्या होता है? जब भी एक मूवमेंट एक्शन प्लान को तय करनी होती है सफर 1000 पॉइंट की ना, कभी कभी क्या होता है, रिफॉर्म होने के लिए एक मूवमेंट को फर्स्ट फ्यूल चाहिए होती है, करेक्ट? तो वो फ्यूल भरता है फुल टैंक होने तक. फुल टैंक जैसे ही होता है वो क्या करेगा, डायरेक्ट उसका डेस्टिनेशन पॉइंट तक ही जाके रुकेगा. सो वैसे ही कुछ हुआ था कल के दिन. दिस इज अ रिफॉर्म मूव, ये वाला जो
फ्यूल लिया, राइट, विदाउट एनी रिजेक्शंस, फॉलोड थ्रू में डाइल्यूशन अलॉट किया 1 and 2 एंड कंटिन्यूटी में टारगेट तक जाके रुका. So that is the formation of reformation. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सप्लाई में कर लो. MTSL को 4320 के पास रख लो. सर डिड यू टेक शॉट? नहीं यार, कन्वर्सेशन कैंडल है, 40 पिप की मूवमेंट है, कौन ले? लॉन्ग में है. अभी लिए नहीं, अभी मेरा सेटअप नहीं बनाया. एड ऑन नहीं किया. 4:30 को एक एंट्री हुई थी सुबह में. कैन यू शो वन एग्जांपल? डेफिनेटली. What do you notice over here? Right? So यहाँ पे the car what you wanted to go in had decided that okay, the destination is XYZ, Kashmir to Kanyakumari. Sorry, Kanyakumari to Kashmir. So वो क्या किया? कन्याकुमारी से निकला, एक पॉइंट ऑफ एक्शन में एलजी क्रिएट हुआ था यहाँ पे, राइट. एलजी क्रिएट होने के बाद मार्केट डेवलपमेंट में गया. डेफिनेटली वन गो में कन्याकुमारी से कश्मीर तो नहीं जा सकते हो. लंच ब्रेक. सो लंच ब्रेक पे फ्यूल भराना था, पूरा फ्यूल भराया. फ्यूल भराने के बाद एक्सटेंशन में वन वे गो. कैसा होता है मूवमेंट? ओके, स्मूथ रोड है, विदाउट एनी डाइवर्जंस, विदाउट एनीथिंग. दैट इज व्हाट रिफॉर्मेशन ऑफ द मूवमेंट. एक गो में टारगेट टीटीएस 2.0 होता है. एंड डाइल्यूशन किसे कहते हैं? ओके, चलो टारगेट हिट हो गया. मूवमेंट एक्शन प्लान पे समझो एग्जांपल ये है, यहां से यहाँ 100 रुपया पहुंचा. ठीक है, नंबर्स मत देखना. सो दिस वाज द 0 रुपीज, दिस इज 100 रुपीज, राइट. सो अभी यहाँ पे डाइल्यूशन कहाँ पे है? ओके, मेरे को अभी फिर से कन्याकुमारी से, सॉरी, कश्मीर से कन्याकुमारी आना, करेक्ट. तो यहाँ पे डाइल्यूशन देखेगा, फ्यूल भराएगा. तो वो फ्यूल कहाँ पे भराएगा? वो डाइल्यूटेड पॉइंट में भराएगा. मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से जाएगा, आधा रूट तक तो जाएगा ना. आधा रूट तक फॉर्मेशन पे डाइल्यूट किया, इंटैक्ट 1 कंप्लीट की, इंटैक्ट 2 कंप्लीट की, राइट. इंटैक्ट 3 पॉइंट ऑफ एक्शन पे आके 1 आवर फॉर्मेशन पे रिजेक्शन लेके कंटिन्यूटी इन द मूवमेंट. सो इधर से इधर सो गया है, नीचे आया, 50, 70, 30 से रिजेक्शन लिया, उधर से कंटिन्यूटी इन द मूवमेंट. इसका सफर कहाँ तक होगा? 200 रुपया तक, जो कि डेस्टिनेशन पॉइंट कन्याकुमारी होगा. एमटीएसएल को स्ट्रिक्ट ट्रेलिंग में रखो. आईडी में जो जो एंट्री हुए हैं सब टेक होम 150 पिप्स. अरुंधति मैम, अगस्त्या, छाया, श्रीनिवास सर, सबका एमटीएसएल एंड टीएसएल इस फॉर्म में होगी. ओके. हर्षिता, नहीं नहीं, ऊपर करो. आईडी ट्रेड का 4320 बोल, 4320 पे
नहीं नहीं, ऐड ऑन इतना जल्दी मत देखो, आने दो और थोड़ा नीचे. And all the beginners and new members who are watching the stream, rules is very simple. Whatever strategy, whatever rules, whatever concepts, whatever formulations you guys are following, 6 months of back testing, 6 months of forward testing, 1 month of live analysis, come with a smaller capital, compound it, build it while following a proper risk to reward. And how can you do it? By removing the fear, greed, and FOMO. And it's your hard earned money, so make sure you learn before you earn. And most importantly, don't give your accounts to manhandle nor follow any tips. Execute the trade with precision of your analysis, your mindset, your understanding, and your wins, your losses. So you can learn even better than anything else. This is Nitesh signing off. मिलते हैं अगली stream पे. तब तक के लिए take care. Bye bye.